So we will start exercise 13.1 already started. And which question? Question number 7, I think. Yes, sir. Seventh. Question number 7. So exercise 13.1, question number 7. Question number 7 is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. Right. It is a shape of cylinder. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. This is surmounted by a conical top. Okay. And if the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 and 4 meters. Height of the cylindrical part is 4 meters. No, height is 2.1 meter. Height is 2.1 meter. Height of the cylindrical part is 2.1 meter and radius and the diameter of the cylindrical part is 4 meter. Diameter means radius will be equal to 2 meter. Please see that. Okay. And the slant height of the top is 2.8. So slant height of the top is 2.8 meter. Okay. And find the area of the canvas for making the tent. You need to find the area of canvas. इसको इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, मतलब कितना कपड़ा लगेगा. That is, we need to find and also find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹5 per meter square. Okay. So basically, Sir, at the rate of 500. 500 per meter. 500. So basically, we need to find the cut surface area of mode and cut surface area of cylinder. For cut surface area, so area of canvas required for tent. Area of canvas required for tent will be equal to, just a minute. Area of canvas required for a tent will be equal to cut surface area of cone plus cut surface area of cylinder. Cut surface area of cylinder. Okay. So cut surface area of cone will be equal to pi RL and cut surface area of cylinder is 2 pi RH. Right. So what is common here? 22,000 rupees. Pi R is common in both. So we can take out pi R common, so L will be remaining and 2H will be remaining. Okay. So now substitute the value of pi, that is 22 by 7. R is 2 meter. L is 2.8 meter and 2 into H is 2.1 meter. So 22 by 7 into 2 into this is 2.8 plus 2 ones are 2, 2 to the 4.2. So 22 by 7 into 2 into this is 4 to 6 and 1 7. So 7 also cancel. So 22 to the 44 meter square. Right? So 44 meter square is the area of canvas required. Now we need to find out the cost of canvas. Cost of canvas, that will be equal to rupees 500 per meter square. So 500 into 44. So that will be equal to 0, 0, 5 4s are 20, 5 4s are 20 or 2, 22 rupees. That will be rupees 22,000. Right? So Yes, sir. this is the cost of canvas required for making this tent. Clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir.
Yes, sir. And now tell me how many of you have participated in R1 challenge? Sir, I started seeing the video of Sir, algebra. I too. I Sir, am I also am also start. started. How many of you My have first module is complete. number? I want to know the number of the student. सर व्हाट्सएप भी आपको कर दिया नाम. अच्छा किए हो? Okay. Yes, sir. Yes, sir, Yes, group sir. में. Online class 10th group में. मैं तो सर आपको पर्सनल में कर दिया. Okay. I will see it today because I didn't get time yesterday to see WhatsApp. I will see. Okay, sir. Okay. सर बट उसमें जो स्कूल वगैरह का नाम ऐसा तो कुछ था ही नहीं. डायरेक्ट Yes, लॉगिन हो गया. sir. Actually, Yes, sir. Sir. नंबर बताए उसका सर, नाम डालने कहीं का वो था ही नंबर नहीं भी सर. नहीं यूज डायरेक्ट हुआ. लॉगिन हो गया. no. Actually, I had seen only one video, so I don't have any idea. I will go through it today and I will tell you. Okay, sir. Okay. Actually, I don't. मैं को है उसमें मेरा हो गया था पूरा. हाँ मुझे भी नहीं मालूम है. Actually देखना पड़ेगा मुझे. मैंने खाली फर्स्ट वाला पार्ट देखा था. Now next question. सर वो स्टोरी टाइप का थोड़ा बताता है. हाँ. Question number 8. Question number 8. स्टोरी पे डाला हूँ तो इस लिंक को खोले. हाँ क्या बोल रहे हो? एकदम अच्छे से मैसेज बना के दो नहीं. आपके आवाज ठीक से. आई था रैंडम टाइम पास. ऋषि सर देती आपकी और माइक माइक क्लियर आवाज नहीं आ रही है. हेलो. सर आवाज आ रही है. वो माइक ऑन करके रख दिया था. अच्छा. क्वेश्चन नंबर 8. ओके. फ्रॉम ए solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter is 1.4 centimeter. So there is a cylinder is having height. Cylinder is having height 2.4 centimeter. Height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4. So radius is 1.4 by 2, that is 0.7 centimeter. Okay. And what is given? It is given that a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. अब इसके अंदर में हम conical cavity निकालेंगे is same height and same diameter. This we are taking out. Okay. This conical cavity of same height and same diameter are taking out, hollowed out. Find the कोनिकल है कोनिकल. सर सर आपको हाफ हेमिस्फेरिकल बना दिया. हेमिस्फीयर कर देते. to find out the हेमिस्फेरिकल दोनों साइड कर दिया. एक साइड से कौन है वो? है ना. तो total surface area of the remaining solid will be equal to what? Tell me. How will you find out? So total surface area of the remaining solid will be equal to what? Tell me. That will be सर आप 9th क्वेश्चन कराने लग गए. 9. This is 9. ठीक है पहले 9th कर लेते हैं. अच्छा एक मिनट. पहले 9th कर लेते हैं सर, फिर 8th कर लेंगे. लेकिन वह तो 8 के लिए है सर. यस सर. क्वेश्चन देखे हो 9 का और लिखे हो 8 का. 8 का. हाँ वैल्यू चेंज कर दो सर, फिर हम लोग यही कर लेते हैं पहले. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं. हमें सॉलिड आ गया 2.5 सेंटीमीटर कोनिकल कैविटी. सॉरी ये फिगर इसका नेक्स्ट वाला बना दिए इनको. क्वेश्चन नंबर 8. your figure is this. वो फिगर बना हुआ था ना, वही मुझे दिखाई पड़ रहा है. Now
you need to find out the conical cavity you need to find here. ये आपको निकालनी है. So height of the cylinder is how much? 2.4 centimeter. And radius is how much? सर मीटर 0.7 सेंटीमीटर है ना भाई. अब आपको ये निकालना है. This you have to follow it out. ठीक है. So total surface area of the remaining solid will be equal to what? Tell me. So here. सर टी मीन CSA of cone plus CSA of cylinder plus base area of cylinder. ये solid है. Yes, sir. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लो, राइट. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर दो. ठीक है ना. टोटल सरफेस एरिया में सर ऊपर वाला जो मुंह है उसका एरिया भी तो हटाएंगे ना. उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे. यस सर, वो सर्कल भी तो. तो ये आपका कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर माइनस CSA of cone. सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉरी सिलेंडर माइनस. but for the third period find the slant height also है ना. तो slant height L square is equal to H square plus R square. So H is 2.2 centimeter square and this is 0.7 square. So this is 5.76 plus 0.49. That will be equal to 6.25 है ना. L square is equal to this. So therefore L is equal to under root 6.25. That is what? 2.5 centimeter. Right. So now area of the remaining solid will be equal to what? Area of the remaining solid will be equal to क्या करेंगे बताओ? CSA of cylinder plus CSA of cylinder plus CSA CSA of cylinder plus CSA of cone minus base area of cylinder. Base area और top area. Top area. सर बेस एरिया नीचे का जो है वो भी इंक्लूड टॉप एरिया. बेस नहीं होगा शायद. Listen. ये देखो आप कर्व सरफेस एरिया लोगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये भी इंक्लूड हो रहा है, राइट. एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर एक्सक्यूज मी सर, है ना. सर आपका जो टॉप है टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी तो कर सकते हैं ना. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. सर उससे ऊपर का तो माइनस हो जाएगा ना, कोन के साथ माइनस हो जाएगा. नो सर वो गलत हो जाएगा क्योंकि बीच की जो स्पेस है उसकी एरिया तो कहाँ से माइनस हो आएगी. जाएगा फिर. अरे टॉप माइनस हो जाएगा वो मान लिए, लेकिन अंदर की तो गहराई हट रही है वो कहाँ से आएगा. ये देखो क्या करो बता रहा हूं. तुम लोग कर्व सरफेस एरिया कौन लो, एरिया सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लो, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर लो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लो तो आ जाएगा. हम ऊपर का इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना. यस सर आ जाएगा. 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, उसके बाद पाई आर एल ऐड कर लो, हो गया. हो गया. हाँ सर, हो जाएगा. That is बस और करना क्या है. surface area तो नहीं है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
plus ये क्या करना है? area of base of cylinder है ना, and plus curved surface area of cone, curved surface area of cone. That's all. इससे आ जाना चाहिए, करके देखते हैं. Solve everyone. So when you solve, what you will get? Curved surface area of cylinder is 2 pi r, right? And area of the base of the cylinder is pi r square. And pi RL or plus pi R square. Pi RL. what is common in all? That is 2 pi. Only pi r is common. Pi r is common. When you take pi r common, 2h plus r plus l. So this becomes 22 by 7 and r is 0.7 into 2 into h. 2 into h. H is 2.4 centimeters. 2.4 plus r is 0.7 plus that is l. L is what? L is 2.5. Now solve this. So this will be equal to 0.1, that is 2.2 into this is 4.8 plus 2.5 plus 7, 3.2. ठीक है ना? So 2. Yes, sir. कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना? सर इतना ही बस आएगा, Yes. और इसके बाद बोले नियरेस्ट वाला बताना है. The nearest it is. 18 centimeters square across. Yes, sir. Done. That's all. ठीक है? Yes, sir. तो आप लोग एक काम करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है उस पार्ट को आपको लेना ही नहीं. अदरवाइज क्या होगा, आप एक लोगे फिर बाद में माइनस करोगे, इससे अच्छा उस पार्ट को लेते ही नहीं. सर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें. हाँ, तो जो पार्ट, द पार्ट व्हिच इज नॉट इंक्लूडिंग इन द फिगर, दैट यू नीड नॉट टू टेक दैट. ओके, यू नीड नॉट टू टेक दैट पार्ट. Done. Yes. Now, the last one. Question number 9 is very good question. Okay, a wooden article was made by scooping out the hemisphere from each end of the solid cylinder. Okay, and if the height of the cylinder is 10 centimeter, so height of the cylinder is 10 centimeter. Okay, 10 centimeter, and its base radius is 3.5. So base radius is 3.5. This is R. This is 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. You need to find the total surface area of the article. That is total surface area of the article. That will be equal to, tell me, क्या क्या होगा बताओ. CSA of CSA plus SA of CSA or 2 into CSA of hemisphere. hemisphere.
Yes. अब देखो सर या इसको तो एक स्पीयर भी ले सकते हैं, स्पीयर PSA लेके of भी कर one सकते हैं। sphere plus LSA of one cylinder. देखो ये टॉप एंड बॉटम तो एम्प्टी है, तो टॉप एंड बॉटम का एरिया हमको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो यू विल टेक कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, राइट? Yes, sir. So Yes, sir. कर्व सरफेस एरिया ऑफ Marriage. cylinder plus 2 into surface area of hemisphere. So curved surface area of cylinder is 2 pi RH and plus 2 into surface area Plus is 2 into 2 pi RS okay. So what is square. common? 2 pi R is common. So 2 pi R is common, then what will remain H? And after taking out 2 pi R, 1 2 R will remain. ठीक है ना? अब substitute कर वैल्यू 2 into 22 by 7 and R is 3.5 into H is 10 centimeter plus 2 into R. 2 into R is 3.5. So that equals 7 5 35. So 2 into 0.5 is 1. सर 22 है ब्रैकेट से बाहर वाला। Is equal to 3.5 into 2 is 7. That is 17. So 17 to the 34 and 17 to the 34, 34 of 24 that is this centimeter square. 374 centimeter square. Is that clear? yes sir clear Sir, here we can do like that also by not taking that common 2 by r. Yeah. Well, we don't need to take because these two parts are empty ना. तो यदि आप लोगे तो पूरा लोगे फिर से उसको माइनस करोगे. So that if that part is not included, so what is the need of taking that part? So we'll from initially we'll remove it. Okay, sir. Clear. So can we start 13.2? Yes, sure. So we move on to the next exercise. That is 13.2. Okay. So 13.2. Exercise 13.2. The first question is solid in the shape of cone is standing on the hemisphere. Standing on the hemisphere. There is a hemisphere and one cone is standing on it. One cone is standing on it. A solid in the shape of cone is standing on the hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. Means radius of cone and radius of hemisphere is both equal to 1 centimeter. Okay. Radius is 1 centimeter. The radius is 1 centimeter. Okay. And thus the height of the cone is equal to radius. Height of the cone means this height. Height of the cone is equal to radius means it is equal to 1 centimeter because radius is 1 centimeter. Okay. length is equals to root 2 And find the volume of the solid in terms of pi. It is directly given that you need to find the volume of the solid in terms of pi. It means you don't need to put the value of pi there. ये pi के terms में आएगा. So volume of solid will be equal to volume of cone. और 2 by 3 pi centimeter cube आ volume जाएगा. of plus volume of hemisphere Radius 1 centimeter. Okay. So length root 2 आ जाएगा volume of cone is 1 by 3 pi r square h plus volume of hemisphere
2 by 3 pi r2. So what is common here? 1 by 3 pi r square. Pi r square common. Pi r square is common. When you take 1 by 3 pi r square, h will remain here, and 1 by 3 pi r square is common, then 2r will remain. Now substitute the value of r and x 1 by 3. You don't need to put the value of pi here, and r is 1 square, h is 1, and 2 into r is 1. So 1 by 3 pi into 1 into 3. So 3 cancel, that will be equal to pi centimeter cube. Okay. There is some important information regarding this volume and curved surface area related problem. Whenever we are talking about the curved surface area, total surface area, and 2 or 3 figures combined, then we have to think about, when we are talking about the area, we must think on it that which part is including, which part is not including, right? And there is no subtraction unless and until you are removing something. But as far as volume is concerned, right? As far as volume is concerned, you just, if 2 figures or 3 figures are combining, then we'll add the volume of all the figures, right? Or we have to subtract one volume from another volume of solid, then you just subtract the volume of first figure to second figure. Okay, this is the difference between the area related problem and volume related problem. This must be keep in your mind. So एरिया वाले प्रॉब्लम में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, right? Because your one wrong step will pay you a lot, means you have to pay for this. यदि आप ये गलती करते हैं, समझने में कोई गड़बड़ करते हैं, तो आपका मार्क्स कट जाएगा. ठीक. Now next is question number 2, that I will make only figure and you will calculate all the things. So question number 2 is Rachel, an engineering student, was asked to make the model shaped like the cylinder with the 2 cones attached to its 2 ends by using the aluminum sheet. Rachel एक engineering student है और this is preparing one model which are having the cylindrical in between, and there are 2 conical sheet he has to attach in both the ends, right? Now the diameter of the model is 3 centimeter. So you can see here, because both this figure and this figure, solid figure, having the same base, you can see same base है सबका. देखो base अलग अलग नहीं है. It means what you will do when the radius will be same. और वॉल्यूम ऑफ दोनों कॉनिकल निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. diameter of the model there, then radius is 3 by 2 centimeter. Okay, and the diameter of the model is presented as length is 12 centimeter. The length of the model is, the total length of the model is 12 centimeter, right? 12 centimeter. तो हमको इस कोन का रेडियस मालूम चल गया, but we don't know the height of this, है ना? If each cone has the height 2 centimeter, अब कोन की हाइट मालूम है आपको, यहाँ से यहाँ तक हाइट है 2 centimeter,
2 centimeter and height is 2 centimeter. So you can find out the height of this because 2 plus 2, 4. So 4 will be subtracted from 12. Then you will get the height of 8. cylinder. So ये दो small h है हमको capital H कर देते हैं. Capital H will be equal to 12 minus 2 plus 2. That will be equal to 12 minus 4, that is 8 centimeter. Is it clear? 8 centimeter. Clear hai? Now, what you need to find the volume of the air contained in the model. So, volume of air contained in the model, that will be equal to volume of air Cylinder. contained in the model will be equal to what? Tell me. Volume of cylinder. Volume of cylinder plus volume of lower conical. That you can find out. So, volume of cylinder plus 2 into volume of cone. That's all. So, you can easily find out volume of cylinder is what? Volume of cylinder is 1 by 3 pi. 1 by 3 pi r. When you are putting the height, you should be very careful because height of cylinder is different and height of cone is different. That is why I have represented the height of cylinder as capital H and height of cone as small h. Okay. If you will put the same value, either capital H or small h, then you will not get the correct answer because the height of both the objects are different. So 1 by 3 pi r square h plus 2 into 1.5 pi. volume of cone is 1 by 3 pi r square h because height of cone is small h because radius is common. और आप सिलेंडर में भी सेम लिख दियो. So what is common here? 1 by 3 pi and r square is common. So when you take out 1 by 3 pi r square common, what will remain? H plus 2 and pi r square is 1 by 3 pi r square is common, that will be equal to 2h. And you will put the value of pi r and h here. I hope you can solve it. Can you solve it? Yes. सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच होता है 1 by 3 पाई आर यस स्क्वायर. सर, वही तो बोला मैं अभी. Volume of cylinder is pi r square, है ना? And volume of cone is 1 by 3 pi r square. So what will be? कॉमन गलत हो जाएगा. So that will be pi r square. Pi r square will be common and h will be Yes sir. and here 2 by 3h. ठीक है? यस सर. Okay. Now substitute the value of r and h and pi. You will get the answer. Solve it now. यस सर, आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब. Yes, sir. 66 centimeter cube. Yes. Shampoo. Completed? यस सर. Yes. Question number 3 is very important. And this question has been asked many times in board exam. Right? Question number 3. Question को अच्छे से देखना है. A gulab jamun contains sugar syrup up to
about 30% of its volume, right? आपके पास एक गुलाब जामुन है, उसमें उसका सिरप जो होती, चाशनी जो होती है, उसका वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम का 30% सिरप है। Find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, सिरप का वॉल्यूम। एंड एक जो गुलाब जामुन का उसका शेप दिया है, दैट इज द शेप लाइक द सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स with length 5 cm and diameter 2.8 cm. So इसका शेप देख लो कैसा है। एक गुलाब जामुन का जो शेप है, इन सेंटर is cylindrical, in center it is cylindrical, and in the both the ends this is hemispherical. So you cannot say this as gulab jamun, actually this is called chamcham, आपको मालूम होगा, है ना? चमचम, Yes, sir. चमचम, लेकिन गुलाब जामुन तो स्फीयर होना चाहिए ना। ठीक है? Yes, sir. ये अच्छा नहीं दिखता थोड़ा। इसका दिया हुआ है आपको क्या? Each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with the length 5 cm and diameter is 2.8 cm. So diameter is 2 cm. So this is equal to diameter is 2.8. So radius will be equal to 1.4 cm. Right? This is having the same common base, so radius will be remain as it is of both the figures. दोनों का radius same होगा 1.4 cm. And total length of the gulab jamun is what? 5 cm. ठीक, तो ये जो हो गया AB radius होगा, that is 1.4. इन AB radius होगा, that is 1.4. तो इसकी हाइट कितनी आएगी? That will be 5 minus 2 into 1.4. 1.4 होगा? Is it correct or not? 1.4 plus 1.4. Sir, correct. Total height में से 2 into 1.4 minus कर देंगे. So that will be equal to 5 minus 2.8. That is equal to 2.2. 2.2. So height of the cylinder will be, cylindrical part will be 2.2 centimeters. Okay. Now we'll find out the volume of syrup in one gulab jamun. Volume of syrup in one gulab jamun कितना होगा? तो सर खोखला गुलाब जामुन होगा। गुलाब जामुन नहीं, पहले तो हमको find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन्स, और गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना है? 30% है। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब उसका जामुन। 30% कर देंगे। यस, मेरे को लगा खोखला। 30% तो आखिरी में ही कट कर लेंगे ना, नहीं तो वॉल्यूम टोटल के साथ। सही बात है सर, 30% आखिरी में करेंगे ना, 45 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ by 10 कर देंगे। हमें तो करना ही पड़ेगा वैसे भी। वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एक स्फीयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर यस सर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है? 2 into volume of cylinder will be equal to 5 r square. Sir, time is less. 2 into volume of hemisphere will be equal to 2 by 3. सर टाइम ही नहीं बचा, Less than 1 minute. खत्म हो जाएगा अभी देख। सर हम लोग कर लेंगे आगे का। एक बार सर बता देना, कल भी ये थोड़ा एक बार बता रहा हूँ, कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग अरे अभी तुरंत बंद हो जाएगा, तो टाइम नहीं है। टाइम अप सर।
less than 1 minute. So pi r square is plus 4 into 2 pi r. So what is common here? Pi r square is common. When you take out pi r square common, what will remain? H plus, after taking pi r square, it will be 4 by 3 r. So 22 by 7 into r square. R square is 1.4 into 1.4 into h. H is 2.2 plus 4 by 3 into r. R is 1.4. So this will be equal to 7 to the 14. So this is 4.4 into 1.4 into how much? This will be equal to 2. Here LCM is 3 and 3 to the 6, 3 to the 6 and 14 to the 42. No, 14 to the 5.6. 14 to the 5.6. 56. Okay. So this is I am कुछ नहीं कर रहा हूँ 4.4 into 1.4 into this will be equal to how much? 12.2 by 3 centimeter cube. This is volume of what? Volume of one blood balloon. Now I am finding out volume of 45 blood balloons. हमारे पास 45 blood balloons हैं. ठीक है? Volume of 45 gulab jamuns will be equal to how much? 45 into this, na? Multiply करेंगे तो लास्ट में करूँगा 44.4 into 1.4 into 12.2 by 3. 3 कट जाएगा 3 1 3 5 that is 15 into 4.4 into 1.4 into 12.2. That's all. Centimeter cubes. Now, ये 45 लाख जब इसका वॉल्यूम है and volume of syrup is what? 30% of the total volume. So, volume of syrup contained in 45 gulab jamuns will be equal to 30% of this. That is 15 into 4.4 into 1.4 into 12.2. Right? So solve this. This will be equal to 30 by 100 into 15 into 4.4 into 1.4 into 12.2. So 0 0 cancel and 5 2s are 5 3s are and this is equal to 2 2s are 2 2s are. So 3 3s are 9 into 2.2 into 1.4 into 12.2. Multiply this. That will be equal to 338.18 centimeter. This is the final answer. Is it clear? So, is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir. Clear. 8.184. हर स्टेप में कैलकुलेशन Yes, sir, clear. यदि आप हर स्टेप में कैलकुलेशन करोगे तो you will take too much time. So calculation part must be done at the end ताकि आपको एक बार ही कैलकुलेशन करना पड़े.
सर दोनों का मतलब वही होगा, पहले निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी। Yes, that depends on you, है ना, आप जैसा करना Yes, sir. चाहो, है ना। हमको खाली आंसर से मतलब है, it means all the steps must be done correctly. Yes, sir. सर अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है। And also important for this year for the standard maths student. Yes, sir. सर आज मीटिंग एंड नहीं हुई, टाइम तो हो गया है। टाइम हो गया, हाँ 12:15 टाइम हो गया है, बस मैं एंड करूंगा, आप नोट कर लो जल्दी से। अच्छा आज रिकरिंग मीटिंग है। नहीं, एक्चुअली क्या है, दूसरी क्लास अफेक्ट होती है ना, अभी कभी कभी क्या होता है जूम में 40 मिनट से भी एबव चले जाता है, अभी हो रहा है ऐसा कुछ दिनों से, नहीं तो पहले 39 मिनट्स में ही हो जाती थी मीटिंग ऑटोमेटिक, अभी लेकिन नहीं हो रही है, हमको एंड करना पड़ता है 40 मिनट में, अदरवाइज दूसरी क्लास जो चल रही है उनको प्रॉब्लम होता है ना। Yes, sir. Thank you, sir. 4 Next मिनट class. बाद हम लोग की Bye. नेक्स्ट क्लास है। ओके, कंप्लीटेड। ओके, Yes, sir. सो बाय एवरीवन। Thank you, sir.